My question, sir, is between September 2021 and April 2022, the consumer food price inflation in India has risen from 0.68 to 8.38 year on year, sir. Currently, it stands at 7.1%. The wholesale price index was at a record high, which is the highest in 30 years in May 2022 at 15.9. I will not go for a tedious repetition of how the prices have gone up, sir, but the excuse given needs to be looked into again, sir. When we spoke about the sunflower oil, they said the Ukraine war was the reason. I can say with full confidence, sir, it is not the Ukraine war. Ukraine also had a drought in 2021 also, in 2020. Russia had a export embargo for their essential commodities. But the war started in 22 of February, sir. So you cannot blame the Ukraine war for all the price rise which is happening in our country. And then secondly, sir, when we see the petroleum price, I would not like to go into the full split up of that, but one issue which I'd like to bring to the House is the central taxes and the state taxes which make part of the entire pricing of a liter of petroleum product. In that, there are various taxes from Government of India, central governments, and one such tax which we notice is the agriculture cess, sir. The agriculture cess which says is 2.5 rupees per litre. Now this is being collected for agriculture, infrastructure and development cess, sir. During the course of the debate, many honourable members have pointed out that there has been a high inflation in Telangana and some other states. I would like to know, through the Honourable Finance Minister in a reply, what is the amount you spent on agriculture infrastructure? In the last 7 years, I haven't seen a single major irrigation project coming up in this country. I haven't seen any major incentives being given to the farmer, but in spite of the fact you've been collecting. For example, in my own state of Telangana, where you say the inflation is high, Telangana, from the most backward region in the country, before it became a state, has become one of the top 5 contributors to the Indian economy in a span of 7 years, sir. How did we have to do this? It could be achieved through the optimum utilization of our river waters, which meant a lot of expenditure had been incurred. Seeing the prosperity on Telangana, which is against the spirit of the federal structure on which the country thrives, they are trying to choke Telangana. You're trying to put curbs on our borrowings. You're trying to put curbs on various limitations. Now, this way, the development of Telangana is one area which would be affected, sir. And I would request the Finance Minister that in the spirit of federalism, do not choke states which are progressing and which are contributing to the country, sir. Thank you, sir. Finally, sir, one last point. Everything was spoken, one about the Russian war, sir, and the other was on the pandemic. But we have to see a lot of mismanagement happened even before the pandemic. It happened during demonetization. The Honourable Finance Minister spoke so highly of Raghuram Rajan and spoke about what he said in the Lok Sabha, sir. But I would like to quote one last before I close, sir. Raghuram Rajan has also said the other day in a conference in Raipur that Sri Lanka was an example of what happens when a country's politicians try to by enhancing fines, rationalization of schedules to the maximum tax. Sir, yes, India is a treasure trove of wildlife species, both in plants, animals, etc. Sir, India consists 2.4% of world area, but 8.8% of all the recorded species we are having in our country, including 91,000 animal species, 45,000 plant species, 4 biodiversity hotspots, in addition to hundreds of natural parks and wildlife sanctuaries. Sir, even our Constitution has recognized the sanctity of the animal life, and it has suggested that all sorts of dignity should be provided to
the wildlife protection of our country. Sir, in spite of all, I would like to put a few suggestions and also a little criticism insofar as the legislation is concerned. As the environmentalists have raised some apprehension and concern on this legislation. First of all, the bill should have been opened for more time in order to garner the public views and criticism, which meant that this suggestion could have enriched the legislative document further. But this legislation has not given the ample opportunity to the common people of our country and especially the civil society. This kind of concern has been raised by the civil society itself. So there is another apprehension that has been depicted by those environmentalists that the environmentalist community is perplexed as to why this reorganization is taking place and on what basis the specific amendment has been introduced. Reorganization means lack of clarity over schedule reorganization. The government must clarify the criteria and protocols adopted. The government needs to adopt a transparent and scientific criteria, such as the IUCN Red List, which adopts criteria such as species distribution, population size, trends in population, habitat status, and threats. Public consultations are also required to ensure scientific and transparent omission and inclusion to the new schedule. I do not know how much R&D government has been expending on the wildlife protection of our country. However, it's a very potential area that needs to be exploited by our talented population. I do not know how many meetings are being held by the National Board for Wildlife, where our Prime Minister is happened to be the chairman. Sir, again, insofar as animal is declared as vermin in this bill, to that point, it has been suggested that the bill may endanger 41 species of mammals, 864 birds, 17 reptiles and amphibians, and 58 insects. This in turn may lead to ecological imbalance and impact local food chains. Experts have also recommended the need for a well-established scientific process for listing and delisting species, as well as the need to specify permitted management measures rather than just direct lethal control. Sir, again, on the issue of alien species can not only threaten biological diversity of the ecosystem, but also have a large impact on human health, food security, and economic growth also. Sir, again, on Section 29 for use of water in sanctuary, here I would like to highlight that the bill proposes that bona fide use of drinking and household water by local communities until they are settled shall not be deemed to be an act prohibited under this section. However, the definition of such bona fide use must be clearly laid down, ideally by the management plan to the respective sanctuary. Sir, so far as Sundarban is concerned, our honorable colleague Saugata Raiji also highlighting the issue of Sundarban. Before that, I would like to draw the attention of honorable minister. देखिए, हमारे देश में सिर्फ नहीं सारे दुनिया में पहले तो ड्रग के बाद आर्म्स के बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उसके बाद इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग सबसे बड़ा क्रिमिनल इंडस्ट्री है और इसमें ज्यादातर मैरीटाइम रूट से मतलब समुद्री की रास्ते से ये इलीगल ट्रेड होते हैं। आपके पास क्या जरिया है ये इलीगल ट्रेड को रोकने के लिए, ये थोड़ा हमें बताइए, क्योंकि सारे हिंदुस्तान में जितने बड़े देश है हमारा, ये जो लेजिस्लेशन लाते हैं आप, मुझे शंका है कि ये हमारे लिए काफी होगा या नहीं, गिवन द मैग्नीट्यूड एंड वाइडर डायमेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया। सर, जब तक सुंदरबन की सवाल है, सुंदरबन में
ये मैंग्रोव इकोसिस्टम के लिए सुंदरबन सारे दुनिया में जाना जाता है। सिर्फ सुंदरबन से बंगाल में नहीं और हिंदुस्तान में नहीं, सुंदरबन की 2/3 हिस्सा बांग्लादेश में है। और ये सारे मैंग्रोव इकोसिस्टम 2 किस्म के इसके ऊपर हानि होते हैं। एक तो एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन होते हैं, दूसरी तरफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन होते हैं। तो आपके वहां जो 2 किस्म के कानून हैं, मान लीजिए प्रोटेक्टेड एरिया, उसको देखभाल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो इनहेबिटेंट जहां आम लोग की आबादी है वो देखने के लिए सुबह की सरकार की वहां दायित्व है। तो इसमें क्या कोई टकराव होते हैं, आप लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन कैसे होते हैं। और दूसरी बात है कि आप ये वर्ल्ड हेरिटेज सुंदरबन को ये इन डेंजर बताया जाता है, खतरा पैदा होते बताए जाते हैं। तो इसमें IUCN आपको क्या निर्देश दिए हैं, क्योंकि सुंदरबन 2/3 बांग्लादेश में और हुआ रामफल में एक कोल फायर्ड प्लांट भी बन रहे हैं। तो इस विषय को लेकर क्या बांग्लादेश सरकार से आप लोगों को कोई बातचीत होता है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आ रही है, उनके साथ की बातचीत होने की कोई संभावना है? फिर इसलिए बंगाल में एक तरफ मैनीटर, आप जानते हैं बंगाल में सुंदरबन में बाघ जब मैनीटर के चलते हुआ सर सुंदरबन विडोज कॉलोनी बन चुके हैं। हजारों की तादाद में विडोज हुआ अपने जिंदगी को और सारे समस्या को झेलते हैं, सरकार किसी को देखभाल नहीं करते। और इसके साथ साथ हमारे बंगाल के हिल्सा, वो आप खतरे की हालात में गुजर रहे हैं। हिल्सा फिश, एम्फीबियन रेप्टाइल, वो तो अलग बात है। हिल्सा जो हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में सबसे स्वादिष्ट मछली है, उनका भी फायदा होते जा रहा है। तो इसलिए सर सुंदरबन की रखरखाव करने के लिए आपको ठोस कदम उठाना चाहिए। ये बात Thank you, sir. I rise in support of the Wildlife Protection Amendment Bill 2021. It is an exhaustive bill with many huge improvements, and the scope of the bill has been enhanced. So have the penal provisions, which are a welcome aspect of the bill. Sir, I'll just give a few points. For Odisha, I want to say we have to increase the number of national parks. I'm requesting the Honorable Minister. In my constituency, there's Harishankar and Narsingnath, which is home to millions of species of fauna. And especially today when our government and the Honorable Prime Minister, promoting Ayush and the alternative system of medicine, this would be a very precious treasure trove for us. Another issue which I want to... Honourable Member, 1 minute. Another point which I want to mention here, sir, there is no mention of forest fires in this wildlife protection bill, and forest fires are a great menace and a constant occurrence. Last year, Simlipal, our national park, was burning for days and days, and about 15,000 trees got burnt. A forest guard died, and there was no way to control that fire, which I support what the Honorable MP Suresh Pujari ji said, that this is largely due to lack of staff training and lack of modern technology like drones and things. We really need to put this in, sir. And under national parks, it's mentioned here no human activity is allowed. But the truth of the matter is that... एक मिनट ना, आप बोलना फिर 1 सेकंड पे आ जाए, 1 सेकंड। माननीय सदस्यगणों, सभा की सहमति हो तो सभा की कार्रवाई इस विधेयक की समाप्ति तक बढ़ा दी जाए। Honorable Member, continue. So, sir, I was saying that no human activity is allowed is given under the national parks. But the truth of the matter is that the villagers and especially the tribal populace which lives there sets fire to a limited area. माननीय सदस्यगण, then it is absolutely uncontrollable. माननीय सदस्यगण, to go and collect the local forest produce.
Sir, my one request is that in my constituency last year, the STF itself uncovered and, 28 leopard skins. Now, every year there's leopard poaching in Odisha, sir. I draw the attention of the Honorable Minister that this should also be, taken into consideration. Thank you very much, sir. माननीय मंत्री महोदय, और कोई सदस्य तो बाकी नहीं रहे बेटा? खड़े हो गए मंत्री जी। सम्माननीय आप कुछ अध्यक्ष महोदय, पहले बोलते हैं। आपके माध्यम से सर्वप्रथम तो मैं सदन के सभी 41 सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने चर्चा में भाग लिया और न केवल भाग लिया, सभी ने एक मत से इस विधेयक के संशोधनों का स्वागत भी किया। लेकिन कभी कभी चर्चा करते समय हम बहुत दूर तक चले जाते हैं। हमारे केरल के एक IMUL के सदस्य कह रहे थे, मैन ऑन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पे बोलते बोलते वो कह रहे थे कि सबसे पहले ह्यूमन बीइंग ही बचाना चाहिए, जो डेवलपमेंट होना चाहिए ह्यूमन बीइंग का ही होना चाहिए, एनिमल की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये सोच रहा था कि ऐसी कल्पना की जाए कि इस धरती पर न पेड़ हो, न पर्वत हो, न नदी हो, न पशु हो, न पक्षी हो, केवल मनुष्य ही मनुष्य हो, तो क्या ये धरती धरती रहेगी? और धरती पे जितने भी लिविंग बीइंग हैं, उसमें अगर संवेदना है, उसमें अगर सोच है, उसमें अगर सबसे ज्यादा सृजनात्मकता है, उसमें अगर सबसे ज्यादा भावनात्मक विषय है, तो मनुष्य पे है। तो मनुष्य की जिम्मेदारी है कि ये धरती उसकी नहीं है, ये वसुदेव कुटुंबकम है, सबका साथ सबका विकास, ये मनुष्य की ही कल्पना है। यही हमारी कल्पना, यही हमारी भारतीयता का मूल भी है। और इसलिए वसुदेव कुटुंबकम और सबका साथ दोनों में कोई अंतर नहीं है। और ये जो सरकार जिस फिलॉसफी को लेकर काम कर रही है, इस सरकार की फिलॉसफी ही भारतीयता के उन मूल विचारों को स्थापित करना है जिसके आधार पे न केवल धरती हरी भरी रहे, धरती में सब लोग सह अस्तित्व के माध्यम से रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि हमारा देश, ये सच है कि दुनिया का केवल 2.4% ही हमारा पास जमीन का हिस्सा है, लेकिन हमारा देश दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जिसमें 17 मेगा डाइवर्स, मतलब सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी जिन देशों में है, उसमें हमारे देश का जो प्रतिशत है वो 8% कंट्रीब्यूशन हमारा बायोडायवर्सिटी को लेकर के आता है। और इतनी जो रिच बायोडायवर्सिटी है, उसमें जो पर्यावरणीय संरक्षण है, इकोलॉजिकल वैल्यूज है। इकोलॉजिकल वैल्यूज का अर्थ है कि हमारे वन, हमारे ग्रासलैंड, हमारे वेटलैंड, हमारे कोस्टल और मैरीन एरिया, हमारा रेगिस्तान का इकोसिस्टम, हमारे वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड, प्लांट्स, ये जो यूनिक सिस्टम हमारे देश का है, ये सुरक्षित रहे। जब राजा जी बोल रहे थे, वो पूर्व पर्यावरण मंत्री रहे, तो उन्होंने कहा कि ये आप एक नई मैनेजमेंट कमेटी क्यों लेकर के आए, और साइंटिफिक कमेटी का अर्थ क्या है। जब ऑलरेडी नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि हम 1970 के दशक से साइटिस के वन ऑफ द फाउंडर मेंबर है, वो भारत रहा है। आज दुनिया में जो अभी लेटेस्ट बॉन में सम्मेलन हुआ है, बायोडायवर्सिटी के सस्टेनेबल यूज को लेकर के जो साइंटिस्ट की रिपोर्ट आई है, वो हम सब लोगों के लिए आंख खोलने वाली है। 50,000 से ज्यादा फ्लोरा और फोना का डे टू डे अपने जीवन में फूड के लिए, मेडिसिन के लिए, एनर्जी के लिए, ऑयल के लिए मनुष्य लगातार इस्तेमाल कर रहा है। उसमें
मैरीन से लेकर सब फ्लोरा और फोना है, इसका सस्टेनेबल यूज कैसे हो, इसका सस्टेनेबल कंजम्पशन कैसे हो। और इसलिए सस्टेनेबल कंजम्पशन और सस्टेनेबल यूज जितनी भी चीजें हैं उसका सबसे बड़ा करने का ये जो संकल्प है, ये भारत का संकल्प है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से ये बताना भी चाहूंगा कि पिछला जब कॉप हुआ था, दुनिया में जो तीनों सबसे बड़ी कन्वेंशन चलती हैं, UNFCCC की दुनिया के जलवायु तापमान के विषय को लेकर के, डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड को लेकर के, जिसका पिछले दिनों कॉप एकदम ईस्ट अफ्रीका में जो आइवरी कोस्ट कोटे डोर जिसको कहते हैं उसमें आवेदन करके उनके शहर में वो, और तीसरा बायोडायवर्सिटी का है। इन सब विषयों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया को एक मिशन दिया, मिशन लाइफ, एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल। और एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल का अर्थ ये है कि जितनी भी बायोडायवर्सिटी हमारे पास है और दुनिया में है, उसका अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसके लिए एक नियमों की व्यवस्था होनी चाहिए। और साइटिस का जो हमारा जो एग्रीमेंट हमने साइन किया, उसके लिए अगर इसका एक्सपोर्ट होता है तो उसके प्रॉपर संचालन के लिए, उसके प्रॉपर निर्यात को महत्व देने के लिए एक मैनेजमेंट कमेटी को बनाया जाना जरूरी है। वास्तव में इससे पहले ये जो काम हम करते थे, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड प्रमोशन के द्वारा और हमारे कस्टम्स के द्वारा ये सारा विषय होता था। लेकिन साइटिस का जो दुनिया में एक लीगल फ्रेमवर्क बनाने की बात है, उस लीगल फ्रेमवर्क के अंतर्गत उन्होंने कहा कि नहीं, आपका जो पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ एक्ट है उसके अंतर्गत एक डेजिग्नेटेड मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए, जिसके द्वारा ये प्रूव किया जाना चाहिए कि जो भी चीज आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो पूरी तरीके से उसको एक प्रमाणिकता के लिए, उसके सर्टिफिकेशन के लिए एक अथॉरिटी की आवश्यकता है। हमारे जम्मू कश्मीर के बड़े सीनियर लोग बैठे हैं, वहाँ जो हमारा जो शॉल जाता है, बहुत भोला जानवर हमारा जो तिब्बत का जो जानवर रहता है, अभी डची गांव का भी उल्लेख कर रहे थे। भारत के सबसे सुंदर जगहों में से एक डची गांव है, और हमारा जो वहाँ पे भालू है, हंगल है, वो दुनिया का सबसे यूनिक है। उसकी चिंता आप कर रहे थे, और निश्चित रूप से मैं भी डची गांव होकर आया था। इतनी सुंदर जगह, इतनी बायोडायवर्सिटी की जगह भारत में हमारे पास है। कश्मीर में बांदीपुरा में हमारे पास वलूर जैसी सुंदर लेक है। लाखों से ज़्यादा हमारे माइग्रेटरी बर्ड आते हैं, लेकिन उनका जो ये शिकार होता है और उसके शिकार के कारण जो बाकी सारा जो चीज़ों में प्रयोग होता है, इसके लिए कोई एक सर्टिफिकेशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए हम अपने देश से किसी भी चीज़ का अगर निर्यात करेंगे तो हम ये प्रमाणिकता देंगे कि हमने उन एंडेंजर्ड स्पीशीज का, उन लोगों का अनावश्यक शिकार नहीं किया है जो केवल हमारे अपने लाभ के लिए, अपने लग्जरी के लिए हो। इसके लिए मैनेजमेंट कमेटी की आवश्यकता है। ये हमारा सामूहिक दायित्व है, ये हमारे भारत की संकल्पना का दायित्व है। ये हमारे बायोडायवर्सिटी के साथ अपने जीव जंतुओं को हम अपने लग्जरी शॉल वगैरह में इस्तेमाल ना करें, इसके लिए मैनेजमेंट कमेटी की आवश्यकता है। इसमें किसी भी प्रकार से राज्यों के अधिकारों को लेने का बात नहीं है। हमारा एक्सपोर्ट व्यवस्थित तरीके से हो, उनको संबल देने के लिए हमने मैनेजमेंट कमेटी को बनाया है। फिर आप कह रहे थे अब साइंटिफिक कमेटी की क्या आवश्यकता है। मैं ये भी जानता हूं कई बार ये जो शहतूश का जो शॉल वगैरह आता है, आखिर इसको साइंटिफिक तरीके से उसका बाल जब आप थ्रेड निकालते हैं तो WII से लेके बाकी सारे जो हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन उसमें निकाला जाता है। और हमारे पास देश में ZSI, WII जैसे बेहतरीन संगठन है। मेरे को ये बताते हुए खुशी है, हमारे ये जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, विशेष रूप से ZSI, BSI, अधीर रंजन जी आप कह रहे थे, ये सब कलकत्ता में स्थित हैं, 100 साल से ज़्यादा पुराने हैं। और आज तो ZSI के पास 1,04,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ का उनके पास एक पूरा उनका रिसर्च है। हमारे BSI के पास भारत के फ्लोरा और फोना का लगभग 35,000 से ज़्यादा का प्लांट का कलेक्शन है। और अभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का परसों ही उल्लेख किया है, और ये सारा अब उन्होंने डिजिटल कर दिया ताकि ये देश की जो हमारी एक भव्य जैव विविधता और जो संपदा है, इसका ज्ञान हमारे शिक्षा के लिए सारे विद्यार्थियों को हो, सारे लोगों को हो। आखिर ये जो प्रकृति का दिया हुआ जो असीमित उपहार है, इसको हम पैदा नहीं कर सकते, इसको प्रकृति ही बना करके रख सकती है। उसका संरक्षण करने की जिम्मेदारी ये हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए साइटिस के प्रोविजन हम इसके अंतर्गत लेकर के आए हैं। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो आप ये कह रहे हैं कि हमने जो शेड्यूल है, 4 शेड्यूल को हमने पहले के जो 6 शेड्यूल है उनको हमने 4 में क्यों करा, क्योंकि ये जब बिल स्टैंडिंग कमेटी के सामने गया था
अधीर रंजन जी, आपका ये कहना मेरे को उचित नहीं लगता है कि इसको जल्दबाजी में किया है। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जयराम रमेश ही थे। 150 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल के उसमें रिप्रेजेंटेशन है। सर, इवन मैं तो ये पहली बार स्टैंडिंग कमेटी ऐसी है जिसमें 6 से ज़्यादा सांसदों ने जाकर अपने बयान और विषय रखे हैं। इसकी संवेदनशीलता ऐसी है कि सबने इसमें भाग लिया और हमने भी स्टैंडिंग कमेटी को कहा कि इसको बड़े व्यापक तरीके से आपको सोचना चाहिए, क्योंकि ये देश के आने वाले समय में भविष्य के विषय को बनाने का विषय, जोड़ने का विषय है। और इसलिए जो पहले के जो हमारे शेड्यूल थे उसको न केवल स्टैंडिंग कमेटी ने अलग एक्सपर्ट से राय ली, फॉरेस्ट क्षेत्र में काम करने वालों के लोगों के साथ राय ली, उसके साथ ही साथ हमारे भी मंत्रालय ने स्टैंडिंग कमेटी को सहयोग किया। हमने ZSI से, BSI से, जो मेरे को लगता है WII से, जो आज के समय में भारत के सबसे बड़े प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, जिनके पास साइंटिस्ट की एक परंपरा है, हमने सबको एक क्रमबद्ध तरीके से हमने बनवाया और क्रमबद्ध तरीके से उस शेड्यूल को बनाने के बाद हमने शेड्यूल को इस प्रकार से सुसंगत किया है कि उसमें किसी भी प्रकार का अवरोध ना है। इसके साथ ही साथ जो साइंटिस्ट ने जो अपने उनका जो एनेक्सर है उसको भी हमने लगाया है। लेकिन अभी हमारे आसाम के साथी कह रहे थे कि अगर कोई साइंटिस्ट के साथ और भारत के विषयों के साथ अगर किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट होगा तो बिल में हमने प्रावधान किया है कि जो भारत के बनाए हुए जो एनेक्सर है वो उस पर प्रवेल करेंगे, क्योंकि हमारी संप्रभुता सबसे ऊपर है। अपने वन्य जीवों की और अपने बायोडायवर्सिटी की रक्षा करना हम जानते हैं, इसलिए हमारी जो संप्रभु संपन्नता हमारे देश की है, सॉवरेंटी है, वो इस पर कायम रहेगी। इसके साथ ही मैं ये कहना भी चाहूँगा कि हमारे देश में प्रोटेक्टेड एरिया का एक पूरी तरीके से नेटवर्क है, जो हमारे देश में न केवल पूरे देश के हेरिटेज को संभालता है, बल्कि वो हमारे देश में सबसे पहला जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क था वो यूनाइटेड प्रोविंस में, जिसको कभी हैली नेशनल पार्क कहा जाता था, आज कॉर्बेट पार्क के रूप में हम सब लोग जानते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ आज हमारे देश में 693 जो 2012 तक हमारे जो प्रोटेक्टेड एरिया थे, अब पिछले 8 सालों में हमारी सरकार आने के बाद उनकी संख्या बढ़कर 987 हो गई है। इसलिए हम केवल डेवलपमेंट में विश्वास नहीं करते, हम डेवलपमेंट के साथ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को लेकर के भी आगे बढ़ने का काम करते हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि ईरान के शहर रामसर में दुनिया के सारे देश इकट्ठे हुए थे और उन्होंने ये कहा था रामसर में कि हमें अपनी जो वेटलैंड्स हैं उनको बचाना चाहिए। मैं अक्सर अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को भी कहता हूं, क्योंकि सारी वेटलैंड या सारी फॉरेस्ट के अंतर्गत नहीं होती। हाँ, इतना जरूर है कि अभी बीच में हमारा एक मंत्रालय का बहुत अच्छा प्रकाशन हुआ है, मेरे को लगता है सभी सांसदों को देखना चाहिए। हमारे जो 52 टाइगर रिजर्व हैं उसमें देश के 200 से ज्यादा जो स्वच्छ पानी के स्रोत निकलते हैं। इसलिए हमारे टाइगर रिजर्व केवल टाइगर के लिए रिजर्व नहीं है, देश के अमूल्य जो जल का जो हमारा जो स्रोत है उसके लिए भी अच्छे स्रोत के स्थान है, इसलिए भी हमें उसका प्रोटेक्शन करना चाहिए और हम प्रोटेक्शन करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध रहते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ वेटलैंड हमारे इस पूरे एनवायरनमेंट के में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। मैं इसलिए कह रहा था, मैं अपने अधिकारियों को कहता हूं कि फॉरेस्ट तो हमको बचाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि फॉरेस्ट हमारा हार्ट है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं वेटलैंड को भी बचाना चाहिए। वेटलैंड अगर हमारा हार्ट फॉरेस्ट है तो वेटलैंड किडनी का काम करती है, वो प्योरिफिकेशन का काम करती है, नेचर के प्योरिफिकेशन का काम करती है। और इसलिए हमारे मणिपुर के जो हमारे मंत्री, उन्होंने जो विषय कहा, मणिपुर में निश्चित रूप से लोकटक जैसी बड़ी झील है, इतनी बड़ी झील है जितनी हमारी कश्मीर में हमारी वुलर जैसी लेक है, और राजस्थान में हमारे पास हमारे हनुमान जी बैठे हैं, इनके यहाँ सांभर जैसी लेक है, जो हमारे देश की अपने आप में माइग्रेटरी बर्ड्स को लेकर के सारी संपदा का काम करती है, और इसलिए उसका प्रिजर्वेशन के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। केरल के काफ़ी लोगों ने जो विषय है, अभी सर्वोच्च न्यायालय का जो इको सेंसिटिव जोन का विषय आया है, उस इको सेंसिटिव जोन के विषय को उठाया। मैं इस माननीय अध्यक्ष महोदय आपके सामने एक विषय थोड़ा आपकी सबके लिए रखना भी चाहता हूं, क्योंकि केरल के काफ़ी सारे लोगों ने इको सेंसिटिव जोन के विषय को उठाया। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो बना, उस नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान के अंतर्गत 2002 में एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी बनी, और उस स्ट्रेटेजी में ऐसा बनाया गया कि जो जमीन जो है हमारे जो नेशनल पार्क के इर्द गिर्द में 10 किलोमीटर तक की जो जमीन है वो ऐसी होनी चाहिए कि उसका
जो नेशनल पार्क का जो इकोसिस्टम है वो इस इकोसिस्टम को खराब ना करे। लेकिन जब वो बना तो उसके संबंध में काफी सारे लोगों की आपत्ति आई। आपत्ति आने के बाद एक दोबारा से मीटिंग 17 मार्च 2005 को हुई। तब ये कहा गया जो इको सेंसिटिव जोन है वो साइट स्पेसिफिक होने चाहिए, क्योंकि केरल की अगर घनी आबादी है, उत्तराखंड की घनी आबादी है, हिमाचल प्रदेश और गोवा की घनी आबादी है, तो साइट स्पेसिफिक होना चाहिए। जो हम अपनी इकोलॉजी को बचा करके और अपने डेवलपमेंट प्लान को आगे ले जाना चाहते हैं, उसमें एक जैसा पैमाना कहीं पर भी नहीं हो सकता है। और इस साइट स्पेसिफिक जो हम लोगों ने मान्यता 2005 में दी, उसके बाद फिर हमारे मंत्रालय ने एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी के गठन में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून, जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरमेंट, इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सालिम अली सेंटर फॉर नेचुरल हिस्ट्री, इन सबके एक्सपर्ट की सलाह लेकर उसके बाद हमने ESZ जो का निर्माण किया। और इसलिए इस समय जो देश में इको सेंसिटिव जोन जो नोटिफाई हुए हैं, उसको लेकर एक सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया है और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में पैरा A से लेकर पैरा H तक उन्होंने कुछ डायरेक्शन दिए हैं। हम उस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में भी वापस से रिकंसिडरेशन के लिए जाने वाले हैं, क्योंकि हमारे को ऐसा लगता है कि ये इसमें काफी सारा क्लैरिफिकेशन नहीं है। विशेष रूप से पैरा 44 के पैरा A और पैरा 44E में अभी क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है, ताकि जो साइट स्पेसिफिक ऑलरेडी ESZ डिक्लेयर हो चुके हैं, एक प्रक्रिया के अंतर्गत जिनको डिक्लेयर किया जा चुका है, जहां पर एक्टिविटीज चालू है वहां पर एक संतुलन रखना चाहिए। इसलिए इस मामले के मेरिट में मैं नहीं कहूंगा, फिर भी तथ्यों को स्पष्ट करने की दृष्टि से मैं आपके सामने, बहुत सारे सदस्यों ने इस विषय को उठाया है, तो मैं एक स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि 44A और 44E के क्लैरिफिकेशन के लिए मंत्रालय ने भी अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन को फाइल किया है और निश्चित रूप से हमारा यह कहना है कि उस कंटेंट को देखा जाना चाहिए। दूसरा एक और जो विषय आया है वो सेक्शन 62 में बार बार किसी भी वन्य जीव को वर्मन करने की बात है। ये निर्णय कभी भी असंवेदनशीलता के साथ नहीं लिया जा सकता है। मैं मानता हूं और मेरी उन किसानों के साथ पूरी संवेदना है जो विशेष रूप से जंगली सुअर के आतंक से जिनके खेत प्रभावित होते हैं। कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर ये और जो टाइगर सेंचुरी है दोनों नजदीक हैं। इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन, अगर आप एकदम वर्मिंग करेंगे तो जो उसका प्रे एरिया जो टाइगर का, उसको भी वो इससे अपना जो भोजन उसको चाहिए वो नहीं मिलेगा। उसके लिए एकमात्र प्रावधान है, मिनिस्ट्री ने फरवरी में 2021 में गाइडलाइन निकाली, उसके तुरंत बाद मिनिस्ट्री ने फिर गाइडलाइन निकाली है और उस गाइडलाइन के अंतर्गत हम लोगों ने चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को यह अधिकार भी दिया है कि वो चाहे तो अपने क्षेत्र विशेष के हिसाब से निर्णय ले सकते हैं और केरल में इसका 10 से ज्यादा बार निर्णय का प्रयोग भी किया जा चुका है। और मेरा यह कहना है कि जिस प्रकार से संतुलित विकास आवश्यक है, उसी प्रकार से अगर कोई भी जानवर हमारी फसल को क्षति पहुंचाता है तो उसके बारे में हमने पूरा सेंसिटिव तरीके से वाइल्ड लाइफ वार्डन को अधिकार दिया है और उस अधिकार का प्रयोग पूरी संवेदनशीलता के साथ होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल के द्वारा हम एक और विषय लेकर के आए हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार पूरी तरीके से फॉरेस्ट राइट एक्ट को मान्यता प्रदान करती है। हम चाहते हैं कि उनके सारे अधिकारों का सेटलमेंट अगर होगा, क्योंकि हमारा देश का जो फॉरेस्ट है दुनिया के अन्य देशों के फॉरेस्ट से अलग है। हमारे यहाँ फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटी है। हमारे कल्चर में फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना है। हमारे कल्चर में फॉरेस्ट के लिए पूरी तरीके से आत्मीयता का भाव है। और ये जो सिंह संरक्षण का, जो हम टाइगर कंजर्वेशन का जो उल्लेख करते हैं, ये महाभारत के उद्योग पर्व में विदुर जी के द्वारा भी इस विषय का उल्लेख आता है। हमारे देश में एक पुरानी परंपरा रही है, लेकिन इस बिल के माध्यम से हमने एक और विषय तय किया है कि जो नेशनल पार्क में जब हम कई जगह पे डिक्लेयर करते हैं तो देखने में आया कि वहां पर रहने वाली जो ट्राइबल कम्युनिटी है, वहां पर रहने वाला जो परंपरागत समाज है, उनको तुरंत ही एकदम से हम जाने को कहते हैं। हमने इस बार उसमें एक प्रावधान लगाया है कि तुरंत उनको विस्थापित नहीं किया जाएगा। जब तक उनका विस्थापन पूरा नहीं हो जाएगा, उनके ग्रेजिंग राइट, उनके ड्रिंकिंग वाटर राइट वो पूरी तरीके से सलामत रहेंगे। विस्थापन का अर्थ है कि एक डिग्निफाइड लाइफ उनको दी जाए। अपने जीवन का जब वो पुनर्स्थापन करे, अभी कुछ दिनों पहले मैं तड़ोबा में गया, अंदर पूरा गांव खाली हुआ,
और अभी और भी गांव की प्रक्रिया, लेकिन इस प्रक्रिया में हम किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं चाहते। हजारों साल से वो लोग वहां पर रहे हैं, उन्होंने उस जंगल को बचाया है, उस जंगल के प्रति एक संवेदना करिए। आप कभी गिर में जाइए, हमारे मालधारी भाइयों को देखिए, हम जिस जगह पे रह नहीं सकते वहां पर वो शेरों के साथ उनके रहने का एक तादम्य का उनका एक जीवन है। हमारे सरिस्का में जाइए, सरिस्का में हमारे जितने भी गुर्जर समाज के, मीना समाज के गांव है, मैं उन सब गांव में घूमता हूं, लेकिन हमारे विस्थापन का अर्थ है कि उनके परंपरागत जो राइट्स है उनको हम एक कैंची के साथ नहीं काट सकते, एक कैंची के साथ उद्घाटन नहीं कर सकते। वो उनकी जीवन शैली है, हम उनको निश्चित रूप से एक सम्मानपूर्वक जीवन देना चाहते हैं। तब तक उनके ड्रिंकिंग और गेजिंग राइट, उनके चारागाह के जो राइट है इस बिल में हमने, ताकि फॉरेस्ट विभाग के साथ किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट ना है। क्यों? क्योंकि ये सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो निर्देशन में चलती है, उसका सबसे पहला जो कार्य है वो गरीब के हितों की रक्षा, गरीब का कल्याण और इस देश के वनवासियों के जीवन में संवर्धन और सुरक्षा लाना, ये हमारी जिम्मेदारी और दायित्व रहता है। हमारे काफी सारे माननीय सदस्यों ने बहुत सारे विषयों को अपने अपने तरीके के माध्यम से रखने का प्रयास किया। हमारे जो शुरू करा था वो पूरा हमारा प्रद्युत बारदोलाई जी ने किया था, वो यहाँ पर बैठे हैं। निश्चित रूप से मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप जो बार बार और भी 2-3 सदस्यों ने जो जामनगर के ट्रस्ट का विषय उठाया, मैं आपको केवल इतनी जानकारी देना चाहूँगा, कर्नाटक हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें उन्होंने रेगुलेशन को मान्यता दी है। बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी एसएलपी फाइल हुई है, सुप्रीम कोर्ट की एसएलपी ने भी कर्नाटक के जजमेंट को अपहोल्ड किया है। और यहाँ पर जब स्टैंडिंग कमेटी के सामने भी ये विषय गया था, विशेष रूप से हाथियों को लेकर के विषय गया था, तो मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि इस देश में एक धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा रही है। हमने अगर हाथियों का पालन किया है तो हमने उसको सम्मान के साथ किया है। केरल से लेकर के बाकी सारी जगहों पर हमने हाथियों को अपने जीवन शैली के साथ अपनाया है, और इसलिए हमने वाइल्ड लाइफ एक्ट में किसी भी प्रकार के कन्फ्रंटेशन को मना किया है। रेगुलेशन सेंट्रल बोर्ड के द्वारा किया जाएगा, लेकिन जो हमारी परंपरा है, हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, उसमें हम हाथियों के संरक्षण को उसी प्रकार से यथावत जारी रहेंगे, केवल रेगुलेशन रहेगा। ये हमने निश्चित रूप से किया है। ट्रांसपोर्टेशन के विषय को भी किया है। और आप तो आसाम से हैं, आप जानते हैं कि हाथी पूरी तरीके से सबसे बुद्धिमान प्राणी है, और इस समय हमारे देश में जो हमारा आपने जो संख्या दी है, मुझे लगता है वो संख्या कम है। अभी तुरंत ही 32वां हमारा जो एलिफेंट का एक और रिजर्व हमने डिक्लेयर किया। टोटल 65,000 किलोमीटर एरिया हमारा हाथियों के लिए है। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि अगर दुनिया के 75% टाइगर जो है वो हमारे देश में है, तो जो 60% एशियाटिक हाथी है वो भी हमारे देश में है, और अगर 100% एशियाटिक लायन है तो वो भी हमारे देश में है। हम 130 करोड़ लोगों की जनता होते हुए भी इतने संवेदनशील भारतीय हैं कि हम दुनिया में सबसे अच्छे तरीके से अपने वन संरक्षण का और अपने वन्य जीवों के संरक्षण को जानते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि विकास और पर्यावरण दोनों अपने आप में एक दूसरे के विरोधी नहीं है। समुचित विकास वही कहा जाएगा जो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकास हो, और इसलिए विकास के मायने में टेक्नोलॉजी का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। और हम भी अपने वन्य संरक्षण के मामले में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। दूर दराज के क्षेत्रों में प्रयोग के तौर पर हम ये चाहते हैं कि उन सब नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर नई उन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए जो हमारे विकास को प्रभावित ना करे, लेकिन विकास को संवर्धन करने का काम करे। जहां तक हमारे सौगत राय जी ने सुंदरवन के लिए कहा है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, लेकिन उसकी चिंता अधीर जी आपको करनी चाहिए, क्योंकि वहां पे पैसा पूरा खर्च नहीं हो रहा है। कभी कभी इस बात के समाचार आते हैं। सौगत राय जी को थोड़ा बुरा लगेगा, अभी खड़े भी होंगे, लेकिन आपको होने की जरूरत नहीं है। इसका उपयोग हम किस प्रकार से करें। और ये एक और है कि भारत का एमओयू बांग्लादेश के साथ सुंदरवन के संरक्षण हेतु है, जिसमें द्विपक्षीय वार्ता के आधार पर संरक्षण के लिए प्रयास किया जा रहा है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं सौगत राय जी, चाहे आप हो, चाहे अधीर जी हो, चाहे मैं हूं, सुंदरवन इस देश का नहीं, इस दुनिया का सबसे यूनिक प्लेस है।
ऐसा यूनिक प्लेस है, दुनिया में इससे बढ़िया मैंग्रोव का जो कोई स्थान नहीं है। उस सब का संरक्षण ये हमारे देश में न केवल हमारी जिम्मेदारी है, ये डायरेक्शन भी हमारा संवैधानिक कर्तव्य भी है कि हमको मिल करके उसको बचाना चाहिए। सेम ऐसे जैसे मैंने डची गांव के लिए, हमारे जम्मू कश्मीर के लिए कहा, हमारी ये ऐसी संरक्षण की जगह है जिसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। उसके साथ ही साथ एक और विषय जो आया है वो साइटिस की मैनेजमेंट अथॉरिटी को सलाह देने के लिए साइंटिफिक अथॉरिटी में मैं आपको ये यहाँ भी स्पष्ट करना चाहूँगा, कोई प्राइवेट साइंटिफिक अथॉरिटी नहीं होगी। इसके लिए हमारे मंत्रालय में WII, BSI, ZSI, ICFRE, IFGTB जैसे हमारे शासकीय संस्थान हैं, और सारे संस्थानों में हमारा कार्य करे, उन्हीं का ही साइंटिफिक अथॉरिटी के रूप में विषय रहने वाला है। लक्षद्वीप में कोई स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी है। मोहम्मद फैजल जी, आपका जो विषय था, एक जो रेड सैंडर्स की बात जो हमारे आंध्र के लोगों ने जो उठाई थी, इसका भी एक्सपोर्ट जो है साइटिस की जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा ही किया जाएगा। बहुत सारे लोगों ने, विशेष रूप से हसन मसूदी साहब जो थे उन्होंने, और जो अगाथा संगमा जी ने भी जो विषय उठाए हैं, वो सारे जो संरक्षण के, प्रिजर्वेशन के संबंध में सब विषयों को हमने इस एक्ट के अंतर्गत पूरी तरीके से समावेशित किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारा देश पूरी तरीके से पर्यावरण और विकास दोनों विषयों के संतुलन के साथ चल रहा है। भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि पिछले दिनों इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री कॉन्फ्रेंस जो हुई, उसमें पहली बार दुनिया ने भी स्वीकार किया कि जंगल केवल टूरिज्म के लिए नहीं है, जंगल मनुष्य के मन की शांति के लिए भी है। जो बात भारत अपनी संस्कृति में कहता रहा है, वो बात अब आज दुनिया भी स्वीकार करने लगी है। और इसलिए मुझे आपके सामने बताते हुए खुशी है कि हमारे देश में न केवल प्रोजेक्ट लॉयन, न प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट डॉल्फिन जैसे प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में सफलतापूर्वक हमारे मंत्रालय द्वारा आगे बढ़ाए जा रहे हैं। हमारा देश पूरी तरीके से वन्य जीवों के अपराध और उसके वन्य जीवों के संरक्षण के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। हम ये मानते हैं कि वन्य जीवों का जो अपराध होता है और विशेष रूप से जिस प्रकार से उनका इस्तेमाल किया जाता है, मुझे लगता है कि देश में इस प्रकार की एक भावना को जगाने की भी जरूरत है कि इनका प्रयोग कम से कम जो हमारे लग्जरी आइटम, हमारे शॉल हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, उसमें इनका प्रयोग नहीं होना चाहिए, इसका बहिष्कार किया जाना चाहिए। ये वन्य जीवों को केवल इसके लिए मारा जाए, ये कोई भी अच्छी मनुष्यता की उपलब्धि नहीं है, इसलिए निश्चित रूप से इसका विरोध होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग सभी सदस्यों ने बहुत अच्छे विचार रखे हैं। मैंने केवल जो 41 के 41 सदस्यों ने इस बिल का समर्थन किया है, उसमें सरकार की भावना को और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे विभाग के द्वारा जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कार्य किए जा रहे हैं, उसको सामने रखने का प्रयास किया है। मैं चाहूँगा कि सर्वसम्मति से सदन इस बिल को पास करे, ताकि भारत दुनिया में आने वाले समय में जो वन्य जीव संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है, उसको अच्छी सिद्धता के साथ कार्य कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी किताब तो इतनी मोटी थी, माननीय सदस्यों को लगा कि किताब देखकर ये माननीय सदस्यों को लगा कि बहुत लंबा समय लगना है। सुप्रिया सुले जी। सर, जस्ट अ स्मॉल क्वेश्चन। आपने कहा पर्यावरण और विकास का साथ रहेंगे, बहुत अच्छा जवाब आपने दिया, लेकिन आरे का जो इशू आज महाराष्ट्र में चल रहा है, इसके बारे में आपका क्या मत है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज कारशेड के बारे में विरोध कर रहे हैं, और वो पहला निर्णय आपकी सरकार का है आने के बाद महाराष्ट्र में, तो इसका थोड़ा सा क्लैरिटी है। आरे फॉरेस्ट सारी स्वीकृति जो संविधान और जो नियम है उसके अंतर्गत ही दी गई है, कोई नियम से बाहर किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी गई है। अधीर रंजन जी। भूपेंद्र जी, वो जो आपने जयराम रमेश जी की बात कर रहे थे ना, मैं कहा था कि सिविल सोसाइटी की राय है। जयराम रमेश ने सिविल सोसाइटी की शंका प्रकट किया था कि और जरा विस्तार से चर्चा करने में एनवायरमेंटलिस्ट ओबी का उन सबका ये राय था कि और ज्यादा चर्चा करने में अच्छा होते। मैं एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आपकी जमाने में एक मिनट अब बैठिए, हो गया ये जो मैं नहीं आप जैसे सवाल नहीं किया, सवाल नहीं, मैं खत्म नहीं किया। अधीर जी, मैं खत्म सवाल नहीं किया। सवाल पे तो मैं बाद में जवाब दूंगा। मैं बताता हूं, देखिए स्टैंडिंग कमेटी के सामने WWF,
डायरेक्टर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, जी ये सारे साइंटिस्ट, आप ये देखिए खुद स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में देखिए 150 से ज़्यादा सोसाइटीज़ और लोग इंडिविजुअल अपीयर हुए हैं। सरकार तो पूरी तरीके से कंसल्टेशन कर रही है, हम कभी भी कंसल्टेशन को मना नहीं करते। ये व्यापक कंसल्टेशन और सहमति के साथ आया हुआ बिल है, इसलिए मैं आपकी इस तथ्य को नकारता हूं कि कोई व्यापक कंसल्टेशन नहीं, सभी लोगों से, सभी पक्षों से व्यापक कंसल्टेशन हुआ है। देखिए, हम लोग भी ये समर्थन किए हैं, लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट, सिविल सोसाइटी के कहने की और हमें थोड़ा मौका देना चाहिए। हमारा काम है सदन के सामने, मंत्री के सामने बात रखना। मैं आपको मैं जो सवाल पूछना चाहते थे कि आप ये कितने सारे प्रोजेक्ट्स को आपने रिकमेंड किए हैं फॉर क्लियरेंस के लिए जहां प्रोटेक्टेड एरिया है? ओके, प्रोटेक्टेड एरिया में कितने सारे प्रोजेक्ट, जंगल में कितने सारे प्रोजेक्ट क्लियरेंस हो रहे हैं? ओके, आपकी तथ्यों के अनुसार राजा जी ये जानना जरूरी है, क्योंकि कुछ दिन पहले आप एक नोटिफिकेशन जारी किया। Sir, Minister has replied my questions. Sir, Honorable Minister has replied my questions. I want to submit before the House through you, sir. I am not doubting the integrity of the ministerial action to incorporate the management authority and the scientific authority. The only thing is you want to constitute these two authorities to satisfy the international conventions. You want to transport the provisions here. But what is lacking is regional eco requirements, state requirements, Gram Sabha requirements, Panchayat Raj institution requirements. These are all properly reflected in the Act. That is why I am submitting before the Minister that some requirements will be, number one. Number two, thank you for the Minister. That number two, no, sir. Nishikant Dubey, no. One. No. You promise eco. No, Nishikant Dubey ji. No, please. धन्यवाद निशिकांत दुबे जी। मैं जिस इलाके से आता हूं अध्यक्ष महोदय, वहां इस देश का सबसे बड़ा धरोहर है, 19 करोड़ साल पुराना फॉसिल है हमारे यहाँ, लेकिन वो पूरा का पूरा जो गिट्टी माफिया है उसने उस फॉसिल को खत्म करने का फैसला कर रखा है। साहबगंज जिले में मंडरों में अभी हमने बनाया है। दूसरा, उस पूरे पहाड़ को खत्म होने के बाद हमारे संथालपना, मैं पूरे संथालपना की बात कर रहा हूं, प्रत्येक 15 दिन में हाथी आते हैं और हमारे आदमियों को मार के चले जाते हैं। और एक भी प्रोटेक्टेड वहां कोई जंगल नहीं है, नेशनल जंगल नहीं है, ना फॉसिल का हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, रोक पा रहे हैं, ना उसको कर पा रहे हैं। और दूसरा है सर कि जो बिहार सवाल ही नहीं, गुमान सिंह डामोर, नो सिंगल वन, गुमान सिंह डामोर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आप अगर डायरेक्ट बोलते रहते ना तो ठीक था, नंबर 2 बोलते रुक जाता है। जनजाति, जंगल और वन्य प्राणियों का सदियों का साथ रहा है। अभी माननीय मंत्री जी ने बोला है कि ड्रिंकिंग वाटर और ग्रेजिंग का अधिकार दिया है, तो हमारा जंगलों में जो जनजाति के पूजा स्थल है उनका भी संरक्षण होना चाहिए। ओके, दूसरा सुनील सिंह जी, दूसरा बोल रहे थे माननीय अध्यक्ष जी, इतने वरिष्ठ सदस्यों को इतनी बार समझाया समझदारी से, पर समझे नहीं वे। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे लोकसभा के अंतर्गत 3 रिजर्व फॉरेस्ट आते हैं। एक तो पलामू टाइगर रिजर्व, जो देश का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है, जहां 1924 में पहले बार पूरे दुनिया में बाघों की गिनती हुई। आप तो पूछो प्रश्न क्या है। दूसरा लावालॉन्ग वाइल्ड सेंचुरी और तीसरा भेड़िया। दूसरा नो प्लीज नो प्लीज मान्य। मैंने एक सवाल उठाया था, सबके साथ न्याय। सर मंत्री महोदय जवाब नहीं दिया कि पश्चिम बंगाल में हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। झारखंड से हमारा बंगाल में हाथी घुस जाता, मिदनापुर में। हाँ, वो जो ये है जमशेदपुर का पास से हाथी आता है, एकदम खेती खराब कर देता है, लोगों को मार देता है। और उत्तर बंगाल में भूटान से हाथी आते हैं। तो हमें हाथी से बचाने के लिए सरकार क्या? ओके, दानिश अली जी। सर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जिक्र हुआ यहाँ पर। सर, वहाँ अभी पिछले दिनों मेरे क्षेत्र का ही
एक लड़के को जो है मतलब बाइक से जा रहे थे और पीछे से झपट्टा मार के लेपर्ड ने, मतलब उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिली सर, हाथ मिले। तो मेरा आपके माध्यम से सिर्फ मंत्री जी से ये सवाल है, क्या ऐसे जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं वहां पर हम लोग कोई मतलब आप सभी अनुभवी लोग हो, आप जो सवाल पूछते हो बिल से संबंधित तो नहीं पूछ ले, कोई के जंगल हाथी घुस गया, कोई के हाथ ले गया। सर मैं वही इनके प्रेमचंद्र जी पूछेंगे, चलो बैठ जाओ आप। Thank you very much, Speaker, sir. Sir, my question is pertaining to the elephant. That the Schedule 1, Part A mammals, the first item is Asiatic elephants. I would like to know from the Honorable Minister as a clarification, whether this will be adversely affecting the tamed elephants, because I've already made in my speech that in Kerala, the cultural festive of Thrissur Puram, like UNESCO-approved programs, cultural programs, and it is a part of the rituals of the people throughout the country, especially in Kerala. In such a situation, whether tamed elephants or the domestic elephants will be protected out of it, whether it will be as Asiatic elephant, excluding the tamed elephants, such a clarification is required, such an amendment is required. I would like to seek the clarification from the Honorable Minister. Okay. Pradyut Borodolai ji. Sir, I just want to draw the attention of the Honorable Minister. मंत्री जी सक्षम है इसलिए सवाल पूछ रहा हूं मैं। Thank you very much, sir. Sir, actually the treatment of connectivity is an integral part of wildlife management. The original law of wildlife protection, sir, let me speak. Wildlife Protection Act, either Wildlife Protection Act 1972 or even your amendments have failed to define the corridors. Corridors are an integral part. Sir, it would be very important that corridors and maintenance and treatment of connectivity should be given in the amendments. Thank you, sir. No, माननीय मंत्री जी, आप जब वन मंत्री थे जब कर देते, बैठ जाइए आप। मैंने इजाजत दी थी, आप दोनों आपस में बात नहीं कर सकते। माननीय मंत्री जी, नो। There will be no inconsistency regarding the protection of our buffer zone is concerned. The matter is sub judice in the Supreme Court. As per the clarification of the direction of section 44A and 44E is concerned, that matter is again before the Supreme Court. We filed a review. So many other states also filed review on the same line. So it's a matter is sub judice. I don't want to be discussed in detail. जो दूसरा विषय अधीर रंजन जी ने कहा है, जहाँ तक प्रोटेक्टेड एरिया हमारे देश में के सवाल है, अगेन आई रिपीट, द नंबर ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया इन द कंट्री विच स्टूड एट 693 इन ईयर 2012 हैज राइजन टू 987. दिस अकाउंट्स ऑफ 5.2% ऑफ द कंट्रीज टोटल ज्योग्राफिक एरिया, और हम पूरी तरीके से उसको बचाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। एक और जो विषय यहाँ पर हमारे राजा जी ने जो विषय रखा था, इस बिल के अंतर्गत जो मैनेजमेंट का विषय है, मैनेजमेंट के विषय में हमने पूरी तरीके से पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इन मैनेजमेंट कमेटी, द बिल हैज इंक्रीज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम विलेज पंचायत, ग्राम सभा, हु कैन बी ए मेंबर ऑफ ए कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी, देयर बाय increasing greater participation of these bodies in the management of community reserve. हमने ये पूरी तरीके से इस बिल के अंतर्गत करने का विषय कहा है। जो हमारे निशिकांत जी ने जो विषय उठाया है, वो जो हाथियों वाला विषय है, ये पूरा एक कॉरिडोर बना हुआ है जो झारखंड से शुरू होकर और बंगाल में हमारा जो बांकुरा और ये जो जिले से मेदिनीपुर होता हुआ फिर उड़ीसा की तरफ एक जाने का रूट बना हुआ है। अभी पूरे तरीके से WII के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट एलिफेंट पे हमारा काम चल रहा है और लगातार उस पे काम चल रहा है। रेलवे Compared to the situation in many of the developed economies is definitely much better, but that does not mean that we are running away from saying
because, like some of the members have said, imported inflation, and because of the imported supply chain related problems and global commodity prices, we are being impacted. These are realities and we are here to answer and discuss on them. Nobody is saying, or nobody is in a denial about price rise. I mean, even Professor Ram Gopal Verma spoke, and he's not here now, but, Ram Gopal Yadav ji, sorry, thank you for correcting me. He said, no, धरातल में जाकर देखिए, numbers नहीं, numbers भी देखेंगे, धरातल में क्या हो रही है वो भी देखेंगे, हम भाग नहीं रहे। और ये भी सच्चाई है कि numbers के मुताबिक भी हमारे inflation rate का एक बैंड रहता है, 4 is the median point, -2 or +2 is what is normally accommodated. And we are at 7 with some effort. Or it can be slightly more than 7, but we have made sure that the Reserve Bank and the government put together are taking enough steps to make sure that it is kept at 7 or below, ideally below 6, the band. So nobody is denying. And therefore, when we say, look at the world where some countries are experiencing inflation which they have not seen in 40 years, 35 years, 27 years, it doesn't mean that we are saying there's no inflation in this country. So, you know, it becomes very, very haranguing. That's not to say about you. If the debate constantly is only attributing things which we have not even said. So let's please, both on data and on Dharatal, thank you very much, Professor Ram Gopal Yadav, constant interaction with people who are affected is giving us inputs, and based on which we are having a targeted approach from the pandemic until today when the recovery is going on. And through the targeted approach, we are reaching sections which so desperately need that help. Of course, yes, you can do a lot more. Nobody's denying that. But that doesn't mean we are saying, no, we won't do anything at all. And also this very impressive narrative which can go on, oh, you've collected so much from the fuel excise duty and the cesses, and you're sitting with it, and the poor person is not being given any help. I'm sorry. I will list out, and I will definitely list out what for the poor person even today we are doing, and we love to do more. That's not to say, oh, you gave 50 people, you don't want to give the 51st. No, we will give. But to think and attribute to us that you're not doing anything for the poor, I'm sorry. And approach that, you have never done anything for the poor, you are always for Adanis and Ambanis, I'm sorry, I'm compelled to take the names here, is absolutely politicizing a debate which is so necessary for the country. So necessary for the country because all of us together, some of us in our states, some of us as members of parliament in our respective constituencies, are working to make sure that the poor's voice is heard. We are trying to reach out. Some of the schemes which don't go down to the ground, we are making sure that is given to them. Each one of us are contributing in this recovery process. And this recovery process is not purely on economic recovery, also because of the pandemic. And I'm glad the health minister is also here about the efforts taken for vaccination, which is so critical for the economy as well. Every member has been keen to know about it, and we've been constantly giving data to prove that everybody is in it so that the economic recovery can happen. So I appeal to the August House that we speak both on facts and on the Dharatal. It's not as if we are only throwing data at people. In fact, most of the times we are accused of giving data which is not right. So I'm definitely emphasizing that comparing with many of our peer group nations, emerging economies, or even looking at some of the advanced economies, India's position. Let's be somewhat comforted by the fact that our macroeconomic fundamentals are strong.
It's all very well for us to be told, no, you should do some more here, some more there. But if you're denying that the macroeconomic fundamentals are not strong, I'm sorry, you're not going to be taken seriously. Not by me. I will take you seriously. You're a member of parliament. I'll honor you. But let's talk on what's actual and not what is generated, I don't know by who. So with that, I just want to highlight one of the points which is important, because we have a temptation to compare, and that's not wrong. Please do compare with our neighbors, with economists which we thought are better than us. Probably they were, and you wanted to tell us that they are better and why are we not. All that is fine. But please don't forget that today, the very same economies which were quoted to us, saying they are doing much better, India is not, because their policies are a lot more friendly for industry. I'm sorry. I'm not reveling in countries which are suffering today. I honestly do want every one of our neighbors, some of whose name I'll take here, to be better off, to be able to perform well. But today's situation, the reality is that some of these countries which have been quoted to us earlier, for one index or the other index, they are better than us, you're not. Look at the reality, please, honorable members. Bangladesh, about which we are periodically quoted. And we have great friendly relations with Bangladesh, and I'm happy for it. And there was a time when we were quoted repeatedly saying Bangladesh is doing well, you're not. But even on a parliament question reply on 1st August yesterday, I have given the data of what is the comparison which has got to be there. I just want to read it out. The per capita GDP at PPP in 2013 of Bangladesh was 3,143 international dollar, as they say it, but it is US dollar. But the same 2013 India per capita GDP PPP was 5057, 3143 versus 5057. And in 2021, sir, when we are repeatedly reminded saying, Bangladesh is doing it, even if they do well, very well. But I want to give you the number. In 2021, Bangladesh per capita GDP at PPP is 6613, whereas ours is 7334. So please do quote, but quote with facts. And the same Bangladesh today, and again I'm underlining this point, I'm not quoting miseries here, but because repeatedly we have been told, oh, you're next Sri Lanka. Oh, you're not anywhere near Bangladesh. But please, let's understand the whole story everywhere. Bangladesh today is seeking from IMF 4.5 billion because they have balance of payment problems. And when I say when our macroeconomic fundamentals are strong, please, let's recognize that our macroeconomic fundamentals are strong. Sri Lanka, of course, is asking for 3.5 billion to the IMF. Pakistan in total is asking in different stages for 7 billion from the IMF. There are times when we have also been told, oh, in India, the petrol price per litre is this, but look at our neighbor, Pakistan, look at our neighbor, Sri Lanka. That's the rate, they are far lower than you. Let's consider it in a holistic way rather than piecemeal saying you are this, we are that, they are there. No. Today's economic distress throughout the world being what it is, let's look at it holistically rather than just throwing one astra here so that, good, I've done my job. No, please. This is a very serious business. And all the points raised by honorable members, because I would like to answer them. I'm not going to get into greater details of other things which govern the macroeconomic situation. The first speaker, Enamaram Karimji, had raised few things which I think were not based on facts. I would want to correct them. He spoke about bank checks. I would like to say there is no GST on withdrawal of cash from bank. There's no GST, please. And today, on very many things, I will say there is no this, no that. On the GST, sir,
because the more I listen, I'm worried that I'm coming, one after the other. More I listen to issues related to GST, I have a concern that probably information is not reaching, the right information is not reaching, and as a result, there's quite a lot of misconception. And I would today attempt to clear some of these misconceptions. So that was, first of all, no GST on bill. Specifically on the checkbooks, GST has been imposed on the bank checkbooks when banks buy it from the printers of the checkbooks, because banks will have to buy it in bulk. And from them, when they obtain it, because banks don't print their checkbooks, they buy it and from the printers, and the printers, after all, for the paper, after all, for the machine, after all, for many other things that they have, and the services that they are paying GST for those inputs with which they manufacture the checkbook and supply to the banks. So for them, there is a tax GST because they already are paying input tax for many of these items. So the stream till the consumer, because it's a consumption-based tax, will have to keep settling tax dues at every level. So that is what is before you, Honorable Member Karim. So I want you to kindly take into cognizance that as regards the consumer or the bank client who takes the money, withdraws the money, there is no charge on him. It is a bank which purchases from the printer for whom there is a GST. Otherwise, the bank will end up having to the printer will end up with at a lesser cost he gives the banks, and the input tax credits will get accumulated. And I elaborate on the fact that the bank, when you go withdraw cash, 5 free transactions from your own bank's ATM and 5 from an ATM of a different bank you can draw without any charge. They are free transactions, so 10 in total. And in 3 banks, I think transactions are limited to 3 and not 5 because in 6 metro cities there are difficulties, and instead of 5 they give for 3. However, for small, no frills, basic saving bank deposit accounts, which are what the common small and middle class families use, they are still permitted to 5 free transactions even in metro cities. So 5 plus 5, 10 transactions in a month is totally free when you draw it from your ATM. So let's please not be led by misinformation. And then banks may provide more if they choose to, because RBI has not asked them to contain it at that. If you want, you can do more. So that is about bank and withdrawals. Again, an issue which I may periodically now and a bit later also elaborate about the pre-packaged item. I hesitate to have to say something here. GST Council has members, ministers from every state. They are not alone when they are inside the GST Council. They sit with their officers as well. So it's not as if it's possible for anyone to say something about some other state outside and get away with it, because they are with their officers. If not the minister himself, the officers also know it. And as regards the latest, the 47th meeting, which was held in Chandigarh, it's a matter of record that all states agreed to the proposal. I put it on record. And if there have been private conversations with some ministers, I recognize the private conversation, Madam Rajnitai. I would like to particularly tell you, private conversations can be anything. The minutes, the oral recordings
all stand testimony that there was not one person who spoke against. And this is my word, you may not trust me, but I have the responsibility as the chairperson of the GST Council to put the facts on record in this August House. Not one spoke against, and I repeat, not one spoke against. So there was not even a single disagreement for the decisions which were taken, and I'm glad Sushil Modi ji spoke about it elaborately, to the extent that some of the members thought, oh, the minister's reply is being given by him. He is a very old hand in the GST. He has been there before the GST Council was formed, in the Empowerment Committee, empowered group of ministers, which prior to GST drew the entire framework. And I do not derive any pleasure by saying something which is not true. You can always pull me up later. My credibility will be gone to the bins. Why would I want to do it? And if ministers who had agreed and who later do not want to stand up and say, look, I agree, I can't hold them responsible. Bhaiya, you were there, why don't you want to say? I will not ask them. In the council, what happened is what is on record, and about that, if there are speculations, it's my duty to answer it. And that's what I'm doing. I repeat, 47th council meeting in Chandigarh, where after a 3-layer process, the fitment committee, and I'll go to the details to tell you who were the members in the fitment committee. And post that, a group of ministers. I'll tell you who were the members of the group of ministers, not just my BJP patriots, compatriots. Ministers from all different states were in this group, some others were in this group, and post that, it comes to the GST Council. And why has this correction become necessary? Then and now, the poor's consumption of any of these are not being taxed even now. Even now they are exempted. And when in 2018, the branded people, some of them who were not registered as brand but unregistered, were also given the exemption. There was a thorough, rampant misuse. Because those who were given exemption, not so registered branded people, were all right getting the exemption, but those who were registered and high-value brands were given a choice, saying if you disclaim your registration of the patent or your copyright or your brand, you also become one of those brand, but not registered. Blatant misuse happened. And this from 2019 has been worrying the GST Council. Every meeting this was discussed, and there were amounts also looked at as to what this misuse is leading to. And in its wisdom, therefore, the council said, we'll have to work out some way in which the poor continue to get theirs without GST, but the brand and unbranded, which is happening, will have to be dealt with. And therefore, what we've done now is this continues for the poor. They're not being taxed. The exemption continues on rice, puffed rice, dahi, chawal, lassi, whatever. It continues. What's now, the exemption has been withdrawn, is on the pre-packed. Even now, when a trader who is dealing with small customers has to sell in loose, he has to buy his product from somewhere. So when he buys in bulk, gets it packed up there and then brings it to his shop, he's not being taxed even now. He can get his 25 kg, 30 kg, come here to his shop and sell to the poor without GST. So the council, and I take extreme, I think it's my duty, and I take extreme pride to say that the council has
applied its mind at various levels, at the Pittman Committee level, Group of Ministers level, and then the GST Council level, that the continuation of the exemption for the sake of the poor continues. And the misuse which was happening from the branded ones, particularly those which are registered brands, had to be corrected. That's what has happened. Elamaram Karimji also was worried that we are dealing with diamonds so kindly. You're taxing them very less. Food products are being taxed at 5. Karimji, at the time when GST was brought in, elaborate discussions took place about diamonds, because in this country, 96% of all imported diamonds were coming, cut, polish, some jewelry, value addition work, get exported. 96% of all rough diamonds which are brought into this country are exported. So obviously, you don't export your taxes. Any export item does not bear the domestic tax. And therefore, earlier where it was 3%, then there were quite a lot of demands from those, and it is a labor-intensive industry. Therefore, a lot of input tax credits were getting accumulated, and because they're selling it with no tax or some percentage of tax, it wasn't benefiting. Therefore, in order that ITC, input tax credit claims, can be sorted out, studies were done on it, and post that the council took the decision to keep the tax where it is. So that is not a favor done to diamonds. It is more the industry and the workers who are all there, and as a result of which, and because 96% gets exported, that rate has been fixed. Honorable Member Karim also said, since independence, if I'm able to recall his words, since independence, there's never been a tax imposed on cereals and food products. Please correct me if I'm wrong. But I'm sorry, no. I need to put the facts before you. Prior to GST, the VAT rates on pulses, dal, wheat, rice, flour, atta, maida, suji, rava, besan, paneer, curd, lassi, buttermilk, by states, I have it here. Every state in some or the other item has imposed a VAT. So since from independence, nobody taxed on cereals, no sir, no. Since you're from Kerala, I'll quote that example first and I read out the others later. In Kerala, pulses before GST was taxed 1%. In Kerala, atta, maida, 5%. Suji, rava, 5%. Besan, 5%. Taxed. So, it's fine. We may probably not have the necessary information in our hand, but every state had one or the other tax on all these items, which today have become the GST-related curse. No, sir. In fact, therefore, there are some states, Jharkhand, for instance, 5% on dal, 5.5 wheat, 5.5 rice, 5.5 maida, suji, rava, 5.5, 5.5 besan, paneer, 5.5. Maharashtra had it even on lassi, curd, buttermilk, 6%. Ma'am, I'm not quoting Maharashtra to, for you to raise up for a point of order. No, with due respect, I'm saying Maharashtra prior to GST taxed lassi,
tax chas, tax buttermilk, curd at 6%, madam. So, paneer was taxed at 6% as well in Maharashtra. So, it's very well for us to very quickly say, no, this has never happened. West Bengal taxed paneer 5%, pre-GST. Point of order. So, no point. Mr. Derek, it is just to disturb. No. Please. There is no point. You listen to her first. Let her make her statement. No, not in between. Not in between. You are not supposed to disturb the minister while she is replying. Don't disturb. Don't disturb. Why should I disturb? No, you are disturbing No, I her only asked reply. for a point of order. Why No, should I am not allowed. Sir, Please be I'm not seated. disturbing. I'll sit down. Please. I'm not allowed point of order. Yes, madam. Sir, is this a classroom? I'll sit down. Once the minister's reply is over, Sir, we are not here. I've asked for a point of order. Because she mentioned West Bengal and Paneer, I asked for a point of order. If you think we are a classroom sitting here with students, on this we walk out. You don't want to give us a chance to even express ourselves. No, sir. Sir, it is extremely unfortunate. It is extremely unfortunate, and this has exposed the Trinamool Congress and my esteemed colleague, the leader of the Trinamool Congress, Mr. Derek O'Brien, stands exposed today in this House. They never wanted the debate in the first place. We have been repeatedly saying they are running away from the debate. We have listened, the Honorable FM, as she has just recovered from COVID. After that, she has sat 5 hours and listened to every honorable member, made copious notes. She is addressing each member's concerns very elaborately. And despite such an exhaustive and very, very articulate response to everybody's issues, if the honorable member wants to find an excuse to walk out, I think it is very, very sad. It only shows that they are getting exposed. They are getting exposed for their failure to take effective measures. Honourable Minister, please continue.